Before saying thanks, Dr. Vitul, just I wanted to know one point. Is there any e-portal जहाँ पे डॉक्टर्स के स्थाये हुए जो मरीज़ हैं वहाँ पे वो कर सके? जैसे अभी यूएस से डेपोटेशन हुई है तो उन्होंने ई-पोर्टल स्पेशल चलाया था कि अगर एजेंट्स के अगेंस्ट जो भी है एक्सप्लॉइटेड है दे कैन नोट डाउन देयर कंप्लेंट्स. तो आपका यहाँ भी है कोई ऐसा ही? अच्छा, आईएमए का कोई ई-पोर्टल है? सर ई-पोर्टल भी होना चाहिए. कई बार क्या होता है कि लोग जो है ना अफेक्टेड है वो सामने नहीं आ पाते, तो आई थिंक दैट वुड बी द कन्वीनियंट वे. मैडम, anonymous complaint, even the government do not entertain the anonymous complaint. You have to file an affidavit in support, and you will have to give evidences in support of your complaint. Then only your complaint can be entertained. हाँ, ऑनलाइन में कुछ नहीं होता यार. ऑनलाइन पोर्टल एक खिड़की, एक किसी का काम हुआ है एक खिड़की से. ये गवर्नमेंट ने इतने चला रखे हैं कि एक खिड़की से काम हुआ है किसी का. यार कोई काम नहीं होता एक खिड़की से. इट इज़ ऑलवेज. सर, गवर्नमेंट को शुरुआत की हुए 10 साल हो गए. सिंगल विंडो सिस्टम गवर्नमेंट का फेल है. हाँ, हाँ? मैं वही तो कह रहा हूँ ना, सिंगल विंडो सिस्टम सरकार ने किया वो भी फेल है. आईएमए तो सरकार के सामने कुछ भी नहीं है. हम लोग तो कुछ भी नहीं है सरकार के सामने. ये गलत नहीं सर. सर इट इज़ अ हार्ड फैक्ट कि मिनिस्टर बीमार होता है तब भी हमारे पास होता है, पब्लिक बीमार होती है तब भी हमारे पास आता है, ब्यूरोक्रेसी बीमार होती है तब भी हमारे पास आती है, और गाली भी हमें ही पड़ती है. जैसे और वो पढ़ती क्यों है सर वो पढ़ती क्यों है? मैं ये मानता हूँ, मैंने वहाँ से भी माना है कि 20-25% हमारे अंदर ब्लैक शिप्स हैं. उन ब्लैक शिप्स के कारण हम लोग टारगेट हो रहे हैं. और फिर अपन बात करते हैं पॉलिसी की, नए रूल्स बनाने की. इस देश में पॉलिसी और रूल्स इतने अच्छे हैं, पहले के बने हुए हैं, उनको सिर्फ इम्प्लीमेंट करवाना है. ये अगर अपन एक्चुअली क्या है, टाइम ही वहीं खराब हो रहा है. मैम प्लीज, टाइम वहीं खराब हो रहा है कि हम एक कमेटी बना देते हैं जी, ये 6 महीने में ये कमेटी एक रूल बनाएगी, रिपोर्ट बनाएगी. We have listened to everyone over here. As per my thinking, we lost the course of this. We have just discussed the shortcomings and mistrust between doctors and patients. But we could not discuss the right path, how can we bring out this universal health. So I hope next time we may be doing much better for that. Thank you very much. ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮ ਅਪ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਿਡਨ ਮੈਸੇਜ ਇਹੀ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਡੈਫੀਸ਼ੈਂਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਕੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਤਾਂ ਮੈਂ ਟੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਦੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਈ ਐਮ ਇਨ ਅ ਹੈਬਿਟ to correct the people, because everybody was talking about the deficiencies. So I thought I will sum up in 5 minutes that all the deficiencies if removed, ਜਿਵੇਂ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਹੈ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੈ, ਰੂਰਲ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਡੈਫੀਸ਼ੈਂਸੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ. ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡੈਫੀਸ਼ੈਂਸੀ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਊਗਾ. ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਖਰਚਦੇ, ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਲਾਜ਼ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਛਾਬੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਔਨ ਪੇਪਰ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਬੈਸਟ ਕੰਟਰੀ. ਸੋ 2 ਥਿੰਗਸ ਸਪਲੀਮੈਂਟਡ ਬਾਈ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ. ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜੂੰਗਾ ਸਭ ਨੂੰ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਸਮ ਅਪ ਕਰਕੇ ਭੇਜਾਂਗੇ ਕਿ ਦਿਸ ਵਰ ਦੀ ਡੈਫੀਸ਼ੈਂਸੀਜ਼ ਵਿਚ ਵਰ ਡਿਸਕਸਡ ਡਿਊਰਿੰਗ ਆਵਰ ਸੈਸ਼ਨ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਵੇ ਟੂ ਰਿਮੂਵ ਦੀ ਡੈਫੀਸ਼ੈਂਸੀਜ਼. ਤੋ ਤਾਂ ਸਰ ਮੈਂ ਟੋਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਫੀਸ਼ੈਂਸੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਮਿਲਣਗੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਮਤਲਬ ਹਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪਾਸੇ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਦੋਜ਼ ਆਰ ਆਲਸੋ ਪਾਰਟ ਆਫ
the deficiencies in achieving universal health care. जे मरीज ही सैटिस्फाइड नहीं है तो यूनिवर्सल हेल्थ कादी है, इक्विटेबल कादी है, जे मैं उत्थे नहीं जा सकता उत्थे जा सकता फिर भी कादी है. So that was the point. So deficiency in my part that I was not able to sum up the things, but I will send you the document and you can read that, you can incorporate your vision into that so that we can recommend it to the state government as well as central government with the logo of Bathinda Citizens Forum, Association of Physicians of India as well as SSD Girls College. So now I'll request Madam to put, pay vote of thanks. Yes, sir. Good evening, everyone. It's both a privilege and pleasure to address such a distinguished gathering at today's seminar on universal healthcare in India. At the outset, I would like to extend my heartfelt gratitude to all of you for your presence, enthusiasm, and contribution to this vital discussion. First and foremost, I wish to thank our esteemed speakers, experts, panelists, DC Saab, Shaukat Ahmed Pyare ji, Dr. Pyare Lal ji, and Dr. Vikas Chavda ji, who have enriched us with the greater insights and knowledge. Special thanks to the organizing team, Dr. Vitul Gupta ji, Anil Bhola ji, and their team, Dr. KK Noria, Dr. Ashwini Malhotra ji, and Kunal Sharma ji, for giving us a chance to be the co-partner of Bathinda Citizen Forum and Association of Physicians of India for organizing this great event. Sir, your hard work behind the scene has ensured the seamless execution of this seminar. Your commitment demonstrates how young minds can actively engage in the nation's pressing issues, particularly one as critical as the universal healthcare. Universal healthcare, what I think, that is not merely a topic for academic discourse, but a pressing need for our nation. Ensuring accessible, affordable, as DC Saab has said, and quality healthcare for every citizen is both a moral and social imperative. Educational institutions like ours can play a big role in raising awareness, fostering dialogue, and preparing the next generation to contribute meaningfully to this great cause. As we are concluding this session today, I urge all of us to reflect on the ideas which has been shared here today. Let us take forward the insights gained today, not just as a concept, but as action that can make a difference. Let this seminar be the starting point of great conversation, research, and initiatives that address the healthcare challenges in our country. Once again, I thank each and every one of you for sparing your invaluable time and contribution to this great event. Together, we can strive towards a future where healthcare is a right, not a privilege. Thank you very much. Thank you, ma'am. I think all the delegates who have attended and speakers are very, very happy, and we must thank from core of our heart to especially you as well as management of SSD Girls College. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦਿੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੰਗਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਐਡੀ ਵਧੀਆ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਘੱਟ ਸੀਗੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਵਰਕਿੰਗ ਡੇ, ਬਟ we are planning to have a meeting on education, traffic, and other will going to come in next 2-3 months. So ਤਿਆਰ ਰਹੀਓ ਜੀ ਹੁਣ, तो ਜੇ ਕੋਈ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇਗੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ. It is really great. तो जिन्ने भी आप बैठे हैं, 3 cheers for SSD Girls College and Madam.